हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नॉलेज अड्डा। आज मैं आपके सामने जॉर्ज बार्कले की फिलॉसफी को लेकर हाजिर हूँ। जॉर्ज बार्कले को बिशप जॉर्ज बार्कले भी कहते हैं, क्योंकि बाद में वो बिशप बन गए थे। एक्चुअली जॉर्ज बार्कले की जो फिलॉसफी है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया एंड इममटेरियलिज्म। व्हाट he says about the object and all the objects and matter around us, or in fact on the earth, are immaterial. जॉर्ज बार्कले कौन थे? जॉर्ज बार्कले was an Irish philosopher who was born in Ireland in 1685 at किल्केनी, एक जगह थी आयरलैंड में, वहां वो पैदा हुए। He got his schooling from there. After that he went to the Trinity College, Dublin. His philosophy revolves around the immaterialistic philosophy. उनका एक ऐसे आया था कि his work was published in the form of essay, and the title was An Essay Towards New Theory of Vision, which was published in 1709. And this was the great idea, great contribution, philosophical contribution towards the psychology of vision and development of the doctrine of the idea of idealist. यहाँ से उन्होंने एक फिलॉसफी में एक नई फिलॉसफी को एक नया डायरेक्शन दिया, और इन्होंने सारे पहले के फिलोसफर के वर्क को क्रिटिसाइज किया, चाहे वो जॉन डोबे हो, चाहे वो कैंट हो, सबों को उन्होंने जो है। His another most enduring work was treatise concerning the philosophy of human knowledge, जो 1710 में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद थ्री डायलॉग्स बिटवीन द हाइलस एंड फिलोनस, जो 1713 में पब्लिश हुआ था। ये थ्री डायलॉग्स बिटवीन द हाइलस एंड फिलोनस was so popular uh, that has established him as a great philosopher in the modern era. हाइलस का मतलब होता है मैटर, इरिश इरिश लैंग्वेज में हाइलस का मतलब होता है मैटर, ऑब्जेक्ट, जो हम इर्द गिर्द देखते हैं, पेड़ पौधे, प्लांट, एवरीथिंग। ओके, एंड फिलोनस मीन्स फिलोसफी। दिस बुक was written in response to the philosophical work of the great philosopher जॉन लॉक। इसमें तीन डायलॉग उन्होंने किया है बेसिकली, और वो तीन डायलॉग क्या है? फर्स्ट डायलॉग में वो कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज मटेरियल सबस्टांस इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट। उनका ये मानना है कि दुनिया में जितनी भी चीजें, जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, दीज आर नॉट मटेरियलिस्टिक सबस्टांसेस, क्योंकि ये सारी चीजें इमटेरियल है। सेकेंड डायलॉग में वो कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स एग्जिस्ट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का की जो क्वालिटी है, वो उस ऑब्जेक्ट से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, हीट, कोल्ड, ये सब जो है आपके आपके ऑब्जेक्ट से बाहर है। ओके, एंड थर्ड डायलॉग, ही टॉक्स अबाउट द फॉर्म एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में दिखता है, एक शेप में दिखता है, तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, इंटायरली डिपेंड्स ऑन वंस परसेप्शन। आप उसको कैसा देखना चाहते हैं। इफ यू वांट टू सी बिग, इट विल अपीयर
look like a big. If you want to see that thing very small, that will you will perceive them as a small. ओके। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कोई दूर से अगर पहाड़ी दिखे तो आपको छोटी दिखेगी। अ, लेकिन अगर वही दूरबीन से आप देखेंगे तो वो बड़ी दिखेगी। तो हाउ यू वांट टू परसीव इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द इंडिविजुअल और इट्स थिंकिंग, आई मीन देयर थिंकिंग। उसी तरह से क्वालिटी की बात उन्होंने की कि क्वालिटी ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द माइंड। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है वो इंसान के माइंड में है। ओके, माइंड से बाहर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको कोल्ड लगे वो मुझे भी कोल्ड लगे। ओके, जो चीज आपको गर्म लगे, हॉट लगे, वो मुझे भी हॉट लगे। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंसरी डाटा ऑफ द इंडिविजुअल, हाउ द हाउ योर सेंस perceive, I mean, realize that, experiences that, feels that. Mm, something is hot for me, but that may not be hot for you. Something is cold for me, but that may not be cold for you. It depends on mind and the sensory perception, sensory feeling. Okay, the three dialogues he talk about. One talks about the material things. कि everything on this earth is immaterial. देयर इज नो सच थिंग एज मटेरियल। मटेरियल कुछ भी नहीं है जब तक कि हम उसमें आइडिया न डालें। ओके, और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल उन्होंने बताया कि यू जस्ट टेक फॉर एग्जांपल एन एप्पल, यू पुट द आइडिया, you put the idea of color, that's why it appears red. You put the idea of taste, that's why it's tasty. You put the idea of form, shape, हाँ, जो आकार कहते हैं, that's why it appears like this, okay, in particular shape. So if you remove the idea of color, taste, and the form, this material is no longer, I mean, relevant for you, no longer exist. It becomes immaterial if you remove the idea of these things like taste, color, or shape, or uh, then this becomes immaterial. Similarly, in every object, uh, the character of the material lies in the mind. इसे वो कहना क्या चाहते हैं? इसे वो कहना चाहते हैं कि जो भी चीज, जो भी मटेरियल आइटम है इस अर्थ पे, वो सारा इमटेरियल है अगर उसमें आइडिया ना हो तो। और आइडिया कौन डालता है? आइडिया हमारा ब्रेन डालता है। ओके, सो एवरीथिंग इज माइंड डिपेंडेंट। हर चीज का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। how we want to perceive, how we want to taste, how we want to uh, look. ओके, ये सब हमारे माइंड पे। तो नथिंग, ही सेज दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट दैट इज माइंड इंडिपेंडेंट। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमारे दिमाग से बाहर हो और माइंड इंडिपेंडेंट हो। एवरीथिंग इज माइंड डिपेंडेंट आइटम ऑन दिस यूनिवर्स। he he believes that nothing exists outside of the sensory world. ये सारी चीजें हमारे सेंसरी डाटा पे डिपेंड करता है। हाउ वी फील, हाउ वी परसीव, हाउ वी एक्सपीरियंस, हाउ वी टेस्ट, एवरीथिंग। मैटर इज नोन बाय देयर sensible quality. Every matter is known by our sensory quality, sense qualities. I told, if you look at the
mountain from very far or distance, the mountain will appear small. Okay, their size will be smaller. But when we look through microscope or through not microscope, through the telescope, then it will appear big. Okay, so it's completely how you want to perceive. Color, shape, size, form, temperature, heat, cold, all entirely depends on our mind. Okay, so every quality of any matters or objects are within the mind. Without mind, it is impossible to imagine any matter और एनी सब्सटेंस आप किसी भी सब्सटेंस को किसी भी मैटर को बगैर माइंड के आप परसीव ही नहीं कर सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल लुक द पीपल who is suffering from brain impairment intellectual disability uh, if you ask anything about that their mind is not able to perceive their mind is not able to put the character or idea of any substance. Okay, you give the apple, he will throw because he has no sense whether this item is eatable or not. Okay, so because their mind is not, proper functional, their intellects are not properly, developed, so they are not able to, I mean, put the character uh, of quality of the item. So this is useless. If it, for दूसरा example, you can say if a tree falls in the forest and no mind is present, does it make a noise? It is immaterial for us. अगर जंगल में कोई पेड़ गिर गया उसने आवाज किया कि नहीं किया ये हमारे लिए इमटेरियल है क्योंकि वहां पे जब वो जंगल में वो ट्री गिरा तो वहां पे कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं था कोई सेंसरी डाटा नहीं है जो ये बता सके कि वहां पे कोई साउंड हुआ था तो वो गिर गया वो साउंड किया कि नहीं किया इट्स इमटेरियल फॉर अस because there was no mind there. The tree falls there in the jungle, and whether that makes sounds or not, uh, it's immaterial for you because there was no mind there. So sensory data is like every matter without idea is immaterial. For anything, sensory data is important. Okay, if there was no sensory data there, so that becomes immaterial for you. Barclay further says that we live in the illusory illusory world. ये जो हम एक दुनिया में रहते हैं ये एक इल्यूजन है एवरीथिंग विदाउट आइडिया इज इमटेरियल जैसा कि मैंने आपको एक एप्पल का बताया था सो एक्सेप्ट द आइडिया rather than material things he has majorly focused on the idea rather than material things Uh, so accept the idea is the real things Uh, material is not real what he wants to say George Barclay that material is not a real the real is idea. So accept the idea rather than accepting the material. When we refer an object, we don't refer to the material form, but to the idea of the object that forms our senses. Okay. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रेफर करते हैं तो हम उसके मटेरियल फॉर्म को नहीं रेफर करते हम आपको अगर कहते हैं कि ये देखो सेब है ये एप्पल है तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये एप्पल है आप ले लो हम आपको इस वजह से दे रहे हैं कि वो एप्पल एप्पल का टेस्ट अच्छा है देखने में अच्छा है प्रॉपर शेप में है ओके
So when we refer an object, we don't refer the material form, but we refer the idea of object that forms our sense, जो हमारे sensory organ में रियलाइज करते हैं. This is all about the George Barclay's, Bishop George Barclay's idea about the object around us, which is immaterial. Thanks for watching. Thank you.